Full multigrid, I told you all what full multigrid is. I can describe it to you again once, and after that we move on to chapter 2 or chapter 3 के problems. I've asked you to submit against 10 points in LaTeX. Chapter 4 के problems against 10 more points in LaTeX. Then we move on to chapter 5 and we can not six, not this, maybe not even seven. I'll increase the submission time. How I know that you are sharing the solution. 60% questions submitted in LaTeX code, the rest submitted in handwriting. With a square that it's all your bottom. I don't your name must be floated. If I can prove that it's not all right. So full multigrid. In this book, they say that if you have a discretization and a working V or a W cycle code, you can put up a full multigrid code as well. But let me warn you, it's a bit deeper than that, just a bit. So the emphasis is on that bit. What is exactly what I'm making a reference to right now? All right, so let's imagine that I have a fine discretization size equal to 128 times 128 grid on a square. I have some problem like a Poisson problem or a reaction diffusion problem with configurations that I can discretize, and I wish to do it with full multigrid. I'll tell you the structure of full multigrid, but I expect you to encode it in MATLAB yourself. And it is a fairly involved piece of work. Okay, so it would be mg, जो मैंने आपको कोड दिया है उसमें mgsolver.m एक function and file है that in my naive opinion or in the way that I would implement FMG, and you are under no embargo to use my method, but I would do it in a way that I would use mgsolver.m not as a standalone file, but as a file embedded in FMG solver. So you are free to select what you do. Right? So students who have a good idea of recursion in computing or in computing functions should understand why I say that. Okay, so what is the main purpose and the main use of FMG? FMG का main purpose क्या है? I can have a multigrid method, and I'm pretty sure that I did show it to you working in the last class, actually efficiently solving problems in different cycle types as well.
which means that multigrid is not really dependent on the full multigrid variant. However, the full multigrid variant is the variant which is the quickest. It has for an order n square grid, it has order n square as the order n square matrix. It has order n square as its complexity. Otherwise, the Vcycle code has an order n square log n square as the complexity. ठीक है, इस बात को अपने जहन में ओके सो एफएमजी में जो स्ट्राइकिंग पार्ट है, एफएमजी इन्वेंट क्यों हुआ, व्हाई एफएमजी, एफएमजी क्या करता है? एज वी जस्ट डिस्कस्ड, अगर मैं फाइनेस्ट लेवल पे स्मूथिंग दूं, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट करूं, उसे नीचे लेकर आऊं, एरर इक्वेशन को फॉर्म करूं, उसके बाद उसको फिर से रिलैक्स करूं और नीचे लेकर आऊं, आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग अंटिल आई रीच अ पॉइंट where either I do hundreds of relaxations, thereby solving the problem, or I invert the problem using algebraic techniques and I start interpolating it back to the finest level. So that constitutes a cycle. What is the role of FMG in it? No. And why? Multigrid would be a part of that we have done, right? Some algorithm would be there. But exactly what is the job or the purpose of an FMG cycle? What does the FMG cycle mainly do? Think about it for a while. So it's not a hint at the answer, it's a hint at how to think about it. Think about pre-smoothing. That's the first thing you do in a Vcycle. What inputs do you require for it? Choice of a method, Jacobi or Gauss-Seidel or something. Number of times to pre-smooth, typically 1, 2, or 3. A right-hand side and a matrix. Is there any other thing that's missing? A starting guess. FMG provides a better initial guess. That's all the fuss about FMG. It constructs a better initial guess at each level in a smart way. Okay, so we are, let's say, we're going to perform a Vcycle at 128, and a Vcycle at 128 would be something like this: 64, 32, 16, 8, 4, and maybe a 2 even. Just take the reciprocal of the scalar, go up, interpolate back, interpolate back, interpolate back, interpolate back, and do a post-smoothing here. So this is one Vcycle. And we just discussed that what we would like to have here is something which is a more informed guess. Just यहाँ pre-smoothing start करने के लिए. Okay. तो वो ज़्यादा informed guess आएगा कहाँ से? आप कहें कि ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम है, जो कि हमने 64 स्क्वायर ग्रिड पे सॉल्व किया है बजाय 128 स्क्वायर ग्रिड पे. नॉर्मली हम उसको जिस तरह सॉल्व करेंगे, हमने उसको उसी तरह सॉल्व किया है. एक प्री स्मूथिंग, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन 32 पे आए, उसके बाद 16 पे आए, फिर 8 पर आए, फिर 4 पर आए, उसके बाद 2 पर आए. इसे एग्जैक्टली सॉल्व किया, 4 पे गए, 8 पे गए, 16 पे गए, 32 पे गए, 64 पे गए, और उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया 128 स्क्वायर ग्रिड पे. अब रिकर्सिवली सोचें, जब 64 पे प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो वही मसला यहाँ पे भी था. प्री स्मूथिंग स्टार्ट करनी है, इनिशियल गैस यहाँ पे भी चाहिए. आपने कहा अच्छा फिर ये करते हैं कि हम 32
से स्टार्ट करते हैं 32, 16, 8, 4, 2, 8, 4, 8, 16, 32 और उसके बाद हमने इसको ट्रांसफर कर दिया 64 साइज के ऊपर. अगेन वी बम्प इनटू द सेम इशू. अब 32 वाली ग्रिड है तो इसके इनिशियल गैस के लिए हमने एक 16 वाली ग्रिड ली. 16 वाली ग्रिड को एक वी साइकिल से हमने सॉल्व किया और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे. बेटर इनिशियल गैस हमें यहाँ के लिए मिल जाएगा, मगर अब इसका क्या करें. ओके फिर इसके लिए अगेन हमने कहा कि ठीक है एक काम करें, यही चीज कंटिन्यू करते रहें. स्टूपिड दो इट में सीम, कहीं ना कहीं जाके तो कुछ हमें फैंसी करना ही पड़ेगा. यहाँ पे अब स्टार्टिंग गैस चाहिए तो हमने कहा उसको इस वी साइकिल से बना लें, टू ग्रिड मेथड से. ये स्टार्टिंग गैस हो गया. तो अब यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व करें और डायरेक्टली इंटरपोलेट कर दें. ओके तो ये वो वाली ग्रिड है जहाँ पे आपने प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व करके डायरेक्टली इंटरपोलेट कर दिया. सो नाउ व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड इज द चॉइसेस यू हैव. दिस part, basically this part, the initialization part can take place at any grid level. Not necessarily कि जब grid में एक ही point रह जाए 2 cross 2, 2 cells cross 2 cells हो जाए grid. ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे. आप कह सकते थे कि जो 8 square grid है इस पे जो problem है, it's coarse enough for me, I'll just resolve it accurately through Gaussian elimination, some other prototypic direct method. And then after solving it directly here, I'll go there and so on. So this is what you could have done. So this by the way is an FMG cycle. आपकी ये वाली जो किताब है ब्रिक्स का जो ट्यूटोरियल है वही कह रहा है कि अगर आपके पास एक कोड मौजूद है एक अच्छे वी ग्रिड साइकिल का, तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहिए कि किस तरह उसको नेस्ट करना है, छोटी ग्रिड से ले लेकर ऊपर आना है, and you're done with FMG. I've been taught something which is slightly different by my supervisor who has also written another book on multigrid. It's known as the Rotenberg book. That says that this interpolation, this one, the one which I have indicated with double line, has to be essentially a better interpolation than this one at the corresponding level. अगर ये बाइलिनियर है तो ये बाइक्यूबिक होनी चाहिए, ये बाइक्यूबिक है तो इसका ऑर्डर उससे बड़ा होना चाहिए. Then only FMG works nicely. But FMG की खास बात क्या है, अब आप यहाँ पर आ गए और इस जगह पे आपने इसको एक V cycle दिया. FMG claims that for all well conditioned problems just one full multigrid cycle. This is by the way just one full multigrid cycle. The problem is already solved up to discretization accuracy here. Problem gone, solved, finished, finito. So एक FMG cycle, properly constructed single FMG cycle solves the problem up to discretization accuracy, order h square. All right, now my question to you is that what code I have given you is a code that would generate any lone or standalone, lone is one word for standalone, any lone V cycle, W cycle और F cycle. ठीक है, ये FMG cycle जो मैंने ड्रॉ करके बताई है आपको, ये V cycle पे मबनी है. जरूरी नहीं है कि हर FMG कोड जो आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें वो V cycle पे मबनी हो, वो W cycle पे भी मबनी हो सकता है, वो F cycle पे भी डिपेंड कर सकता है और उसकी कोई भी साइकिल टाइप हो सकती है. ठीक है, any question? All right, my question to you then in that case is, imagine that you have at this point specified a tolerance which is unrealistic, meaning is smaller than order h square. Order h square is a synonym for discretization accuracy. h आपने लिया है for example 1 divided by 1024, 1024 सेल्स की ग्रिड थी, तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 over 1024 का होल स्क्वायर विच इज अ स्मॉल नंबर. FMG ये कहता है, बल्कि गारंटी करता है फ्रॉम अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सेइंग कि यहाँ पर इस जगह पर when we reach here
problem has been solved up to discretization accuracy. Now let's imagine that I've given it an unrealistically smaller tolerance, much smaller than discretization accuracy, being foolish. Being foolish, I'd emphasize that. How might I proceed from this point onwards, or what might I do from this page? अभी क्या करूँ? So the question is that if I perform one full multigrid cycle right here, I'm guaranteed that the problem has been solved up to discretization accuracy. So if tolerance that has to be set by the user is a realistic value, like something constant times 1 over h square, sorry, not 1 over h square, but h square, constant times h square, then the problem stands solved. But imagine that the user is a bit foolish and has given a value of tolerance which is much less than, let's say, 2 orders of magnitude smaller than, 100 times smaller than the discretization accuracy. How would this algorithm proceed from this point onwards? If I were to draw a diagram, how would I further this diagram towards the right side? Just the V's, not the same thing, only the V's. क्यों? ये जो सबसे बड़ा वाला V है ना, बस जो सबसे आखिरी साइकिल है उसके रेपिटेशंस चलना शुरू हो जाएंगी. Perfect, nice. So इस जगह पे जो आप एक ट्री स्मूथिंग करेंगे, उसके लिए जो एस्टिमेट है, जो स्टार्टिंग गैस है, वो यहाँ से मिल रहा है आपको ऑलरेडी, जैसे कि नॉर्मल मल्टीग्रिड साइकिल्स में होता है. ये सारा फर्स्ट जो है अबाउट एफएमजी is how to obtain the first starting guess and how to have it more biased than having just a random starting vector or just an all zero vector. Okay, must not forget. All clear? It's good to see Furatul and not on it. All right, so we are on chapter 4. Writing multigrid programs can be both fun and challenging. ये fun जो है ना, ये उर्दू वाला fun है, by the way, English वाला नहीं है. The experience of many practitioners suggests that such programs should be highly modular. Modular का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10,000 लाइंस ऑफ कोड का एक ही प्रोग्राम लिख दिया, कहीं पे कोई तब्दीली करने की वजह से कोई चीज बिगड़ी, तो अब यू आर नाउ वंडरिंग फिंगर इन योर माउथ कि अब क्या किया जाए और ये कहाँ से ये मसला आ रहा है, सोर्स ऑफ एरर क्या है. तो मॉड्यूलर प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स लिखेंगे, फंक्शन एम फाइल्स, ईच हैविंग इट्स ओन वेल थॉट आउट सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेट ऑफ आउटपुट्स, डिबगिंग ईच मॉड्यूल, सेटिंग इट असाइड. ये चीज मैं डीबग कर चुका हूँ, अब इसमें मसला नहीं है, किसी और मॉड्यूल में हो सकता है मसला हो, बट दीज आर द वंस आई हैव रिटन एंड डीबग. मॉड्यूल साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है. There are many people who insist कि मॉड्यूल साइज within 100 lines of code होना चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि 100 lines of code is already too big for a new programmer. So write small programs, उनको इनपुट दीजिए और उनसे आउटपुट वसूल कीजिए, वो आउटपुट दूसरी जगह पर इस्तेमाल कीजिए, और हर प्रोग्राम स्टैंड अलोन फंक्शन एम फाइल में रखिए ताकि उसको आप कंसोल पर से डीबग कर सकें. This allows them to evolve from simple relaxation programs and makes them much easier to check and debug. Also, the various components of the program, for example, relaxation, interpolation, and restriction subroutines can be replaced individually, which is exactly what I've asked you to do in your project. I have given you a very modular multi-grid code, which is, by the way, very difficult to acquire from MGNet and other places. You'll not get that ऐसे ही बहुत आसानी के साथ, but you have one, a working code. I've showed you how to work, how to set parameters and options in it. And this is exactly, this part is what I have asked you to do in most of the programming questions bearing 30 points that I'm preparing. I'm already revealing that. चूंकि मॉड्यूलर है, रिलैक्सेशन के लिए gs.m gauss.m एक प्रोग्राम है, jack.m ओमेगा जैकोबी का एक प्रोग्राम है,
maybe I'll ask you to write a 4-directional Gauss-Seidel and replace the smoothing routine by that, and then run the same program, reducing everything to 10 orders, not everything, reducing the residual to 10 orders of magnitude, and now seeing how the entire engine works with your coded component in place of the smoother instead of the factory one that I gave you. ठीक है, this is one of the examples. I may ask you, मैंने आपको जो interpolation दी है for 2D जो project दिया है उसमें interpolation is bilinear. One of the things I've asked you to do in one of the other questions is to replace it with a bicubic interpolation. Check out how well that fits into the entire thing and how does it work. उस पर discuss करें. 10 orders of magnitude, multigrid convergence factor same लाने में कितनी देर लगी, CPU time against that क्या खर्च हुआ, cycles कितनी reduce हुई, और different cycle types पे VW और F cycles पे क्या फर्क पड़ा. In yet another program, I've asked you to wrap the entire thing that I've given you, the entire bulk of it, into an FMG solver, wrap it in, thereby effectively producing an FMG code based on the same thing that I've given you, nothing fancy. There's just one piece that you might have to write, it's bicubic interpolation, just to get that double line wala transfer in the diagram. Right. Choosing a manageable data structure for a multigrid program is essential, but with MATLAB, largely irrelevant. However, if you choose to do it using C structures or using Python or Java, then you may need to develop a data structure for it. Modern programming languages are replete with devices that make data management easy. For example, in most languages, one can declare a structure that groups together all the associated information for each grid level. In a structured language, for instance, a Vcycle should be written along the lines of the following pseudocode. I would not go through it. I don't like going through it. How many of you have had some idea of this language? Nice. This is the language for scientific computing. From historical time, many people foolishly think that Fortran is obsolete. It's not. Let me assure you, to this day, Fortran's number crunching is faster, exceeds C language speeds. Okay, so Fortran, आपको अगर आती है, you have an indispensable tool at your fingertips. Parallel computing में जो fastest number crunching is done through Fortran MPI, message passing. और by the way, MATLAB जो है वो Fortran के कोड से निकल के बना है सारा. I won't go through this, but this is a geometric series that you must calculate for V cycles and W cycles, and this is also given in the Trottenberg book in the second chapter, and you must check it out. Okay, this is the work unit that is required. एक ये भी होता है मुगालता, थोड़ा सा हमें शक हो जाता है कि गाउस साइकिल तो इतना सा कोड है 6 लाइन का, ठीक है हम मानते हैं 3-4 हज़ार दफा चल रहा है, लेकिन है इतनी सी लाइन. तो इन्होंने जो पकड़ा दी है उसमें तो 20 अदद तो पहले फाइल हैं, हर फाइल में जो है 200 लाइंस हैं कोड की. तो ये एवरीथिंग इन यूनिसन जब चलेगी तो वो 6 दफा ही भले एग्जीक्यूट हुई हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो. तो सबसे पहले जो इस शक को हटाने के लिए या डिस्पेल ऑफ दीस डाउट्स, तो पहला काम आप कर सकते हैं वो सीपीयू टाइम नोट कर सकते हैं. अगर 10,000 या 15,000 गाउस साइकिल की इटरेशंस चली और 6 या 7 इटरेशंस मल्टीग्रिड की चली तो कौन जल्दी एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, सीपीयू टाइम कहाँ खर्च हुआ. इसका मतलब ये है कि गाउस साइकिल और a mere smoothing routine or relaxation routine is losing big time against a nested 2-grid iteration scheme. तो ये सारे शुकों को शिबात जो है ना वो सारे उन लोगों के दिमाग में आते हैं जो इसको सही तरह से समझ लेते हैं. These are the initial thoughts that everybody has, that it's such a big interrelated modular code working in a certain way. इतने सारे इसके components हैं, ये कैसे जो है तेज चल सकता है. It's this argument is as foolish as the argument कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जूते पहने में मैं दौड़ लगाता हूँ, अभी तो ये गाड़ी स्टार्ट करेगा, फिर गाड़ी के अंदर ये होगा और वो होगा, गाड़ी मुझसे तेज कैसे जा सकती है.
So this is an argument of that kind. Don't get carried away. Important चीज ये है कि आप ये देख सकें कि ये जो वर्क यूनिट है ये क्या है, ठीक है? नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि रेस कितनी लंबी है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है? जब आप रेस कितनी लंबी है की बात करते हैं तो आपके दिमाग में यकीनन स्टार्टिंग कॉस्ट है, ठीक है? स्टार्टिंग कॉस्ट हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होती, खासतौर पे आपके जार्गन में बड़ी रेसेस में इम्पोर्टेंट नहीं होती, और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में तमाम रेसेस बड़ी रेसेस होती हैं, ठीक है? वो रेसेस जो अभी शुरू हो के अभी खत्म हो जाएंगी ना, वी डोंट गिव अ डैम टू दोस, so those you can just do by hand or ask through your calculator or just do them very quickly. वो चीजें जो स्टॉल कर रही हैं और डेकेड से जो है वो स्टॉल करा रही हैं लोगों के टाइम को, those are the ones that need to be addressed and those are the ones that matter. Okay, computation work unit. किसी को बाइनरी कंप्यूटेशन का थोड़ा बहुत आइडिया है? Okay, is an addition quicker than a multiplication? Addition is quicker than multiplication. Excellent. Because when we have to multiply, then we have to. Yes, and if you're talking of integer multiplication, by the way, you can also make that very quick by using a right shift. All right, so imagine कीजिए कि आपके पास एक loop लिखा हुआ है, ठीक है? For loop. Now all of us understand what a for loop is. Doing something बार बार. और उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है? एक प्रोसीजर है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कहीं पे डिवीजन हो रही है, कहीं पे एडिशन हो रही है, कहीं सबट्रैक्शन हो रही है, कहीं पे एक इफ ब्लॉक चेक हो रहा है। इफ ब्लॉक में क्या होगा? दो का कंपैरिजन होगा और एक लॉजिकल रिजल्ट, बूलियन रिजल्ट निकलता होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस लूप को एक और सिमिलर कैंडिडेट लूप के अगेंस्ट बेंचमार्क करें तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक बेसिक वर्क यूनिट डिफाइन करना है। कौन ज्यादा वर्क यूनिट ले रहा है वो स्लोअर है, जो कम वर्क यूनिट्स ले रहा है, कम इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, वो फास्टर है। तो बहुत सारे लोग खासतौर पे सीएस के रेलम में एडिशंस को, यानी एडिशंस ऑफ टू डबल्स को एक स्मॉलेस्ट वर्क यूनिट कहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जो एक मल्टीप्लिकेशन है वो 3 के बराबर है, 3 डबल्स के एडिशन के बराबर है, एक डिवीजन जो है वो 5 के बराबर है, एक कंपैरिजन जो है वो आधे के बराबर है, एंड सो ऑन। तो एक बेसिक वर्क यूनिट डिफाइन किस तरह से किया जाएगा, इसकी डिटेल्स आपको ट्रोटनबर्ग में भी मिल जाएंगी, इसमें भी मिल जाएंगी। सो रीड अबाउट इट कि ये जो वर्क यूनिट है ये हमें बताता है कि इसका बेसिक ऑर्डर क्या है। ऑर्डर n स्क्वायर लॉग n है, n स्क्वायर लॉग n स्क्वायर है, या ऑर्डर n square है, and so on. So what is the basic work that needs to be performed before a multigrid method would converge? Right, now the next most important thing which would occupy us for the rest of the semester would be local Fourier analysis. The modern name of local mode analysis is local Fourier analysis. Aki Brandt is an Israeli mathematician who in the 70s invented multigrid. While he was in the US in a national lab working on a project. Fourier, and there were some other mathematicians before him that had some loose, unconnected ideas, but the first person who gave out to the world multigrid as a comprehensive, coherent algorithm that can solve problems in fluid mechanics, for example, was Aki Brandt. उसका काफी स्कोप है, and that has to be used in connection with multigrid. So conjugate gradient method is one method in a battery of methods, the collection of which is called Krylov subspace methods. Krylov subspace method में CG है जिसे conjugate gradient कहते हैं, CGS है जिसे conjugate gradient squared कहते हैं, by CG है by conjugate gradient, by CG stab है by conjugate gradient stabilized, by CG stab restarted है, GMRES है, GMRES is generalized minimum residual method,
GMRes restarted है, and there is MinRes, minimum residual method, steepest gradient method. ये जो सारे methods हैं, इनको collectively Krylov subspace methods कहा जाता है. Krylov subspace methods के बारे में आपको दो important चीजें पता होनी चाहिए. पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि ये stationary methods हैं. जो stationary method की prototypic algebraic equation है, un plus 1 is equal to un plus something times the residual, और वो समथिंग एक फिक्स्ड मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो मेथड उस कैटेगरी से बाहर है. ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्राइलोव सबस्पेस मेथड के बारे में ये पता होनी चाहिए कि दे ओनली वर्क वेल इन कंजंक्शन विद अ गुड प्री कंडीशनर, अदरवाइज दे आर स्लो. वो इस तरह का उनका कर्व नहीं बनता कि वो स्टॉल कर रहे हो, उनका जनरली जो है बहुत स्लोली नीचे आता है. ठीक है, GMRes खास तौर पे एक मेथड है which was developed in 1985 by Schultz and Yusuf Saad. Yusuf Saad is in Minnesota at this time. That has superlinear convergence. Superlinear convergence कैसी convergence होती है? Superlinear convergence इस तरह की convergence होती है that the residual starts dropping like this linearly and then goes down linearly again, but there is a superlinear kink in there. तो ये जो superlinear convergence है GMRes की, by the way, GMRes is the most favorite method out there in the American world, and it's biased a bit geopolitically. So entire North America, Canada, and other places, they're very fond of GMRes. It was developed by an American. Yusuf Saad was a Moroccan American. GMRes. In Europe, they are very fond of two methods. One is by CG stab, by conjugate gradient stabilize, and the other is IDS. It's written as IDRS, that's pronounced as ideal. Idea 6, for example, where S is the dimension of the subspace, where it's set as 6, is the most successful one out there, but there are other avenues where S is equal to 8 works better. This was developed by a person called Van der Worst by CG Stab. This was developed by Peter Stonefeld, both Dutch guys, both belonging to Holland. And both are nice methods. They both belong to different universities, by the way. So they have a tussle between different engineering universities. And this is a kind of tussle they have, not the kind that we have. इसके पीछे ये वजह है मुदब्बिर कि ये जो बाई सीजी स्टैब और IDRS हैं, they for example they depend on numerical linear algebra. न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लीनियर अलजेब्रा से हमें लेनी पड़ती हैं. लीनियर अलजेब्रा का जो एक कोर्स हमारे अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाया जाता है ग्रोसली inadequate. इसकी एक ये वजह है. इफ यू पिक अप फॉर एग्जांपल अ न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा बुक स्पीकिंग बार बार अबाउट matrix norm induced by that vector norm compared to matrix norm induced by that vector norm, for example, just this, you will have to revert to a linear algebra book to sort it out. Unless, of course, if you're a very good student. So this is, I don't know how to answer your question very nicely, but there is a class of linear solvers, as you rightly pointed out, prototyped by the oldest one, which is conjugate gradients, which came around 1945. And the newest one, I believe, is still IDRS, which came in 2008, I think. Yeah, I was a student there in the same university I had emerged.
with the developer whose office was. So Pete Sonnefeld was my neighbor. Nevertheless, you can use these methods, but then you must use a very nice stationary method such as multigrid as a preconditioner for them. And one of the problems where this is essentially required and you cannot do away with Krylov subspace method is solving the indefinite Helmholtz equation. If you have the indefinite Helmholtz equation, you do not have a smoother, because all smoothers need diagonal dominance. If diagonal dominance is violated for some some important discretization of a real-time problem, then you don't have a smoother. If you don't have a smoother, you are in trouble. You can't really use multigrid very effectively. And then you can use multigrid in conjunction with, for example, BiCG stab or IDRS or GMRS or something. Okay, so local mode analysis was the name given to an analysis technique for multigrid methods by Aki Brandt, but later on, with many other people working in the same area, this was renamed to LFA or local Fourier analysis. ओके सो अभी तक हमने जो थोड़ा बहुत इसकी स्पेक्ट्रल पिक्चर देखने की कोशिश की है, फॉर एग्जांपल ओमेगा जैकोबी की, वो फोरियर मोड्स के थ्रू देखने की कोशिश की है, फोरियर वन डायमेंशनल मोड के थ्रू, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को डिस्क्रीट रखा गया था. यस, फ्रीक्वेंसीज कैसे डिस्क्रीट रखी गई थी? दे हैड अ डिस्क्रीट कंपोनेंट k which ranged from 1 to n minus 1. ओके, अब हम ये काम करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रीट रखने के बजाय कंटिन्यूअस रखेंगे इन द ओपन इंटरवल क्लोज्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड नेगेटिव पाई टू पाई. तो ये जो हमारे पास पूरे का पूरा वो था, क्या था? तो फोरियर मोड जब हम देख रहे थे इससे पहले, तो फोरियर मोड्स क्या थे? साइन J1 k pi into h, right? No h over n. N sine of J1 n1 or nx, J2 k pi over nx n2, nx कह सकते हैं, y कह सकते हैं. अच्छा, लोकल फोरियर एनालिसिस में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसमें हम ये नहीं कहते कि हमारे पास जो ग्रिड है वो पॉइंट नंबर 1 से शुरू हुई और n-1 तक या n सेल्स के ऊपर ख़त्म हो गई, बल्कि इसमें हम एक बेसिक चीज़ ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास इन्फिनिट ग्रिड है. ग्रिड जो है वो इन्फिनिट है और हम सिर्फ स्टेंसिल को, जो ऑपरेटर का स्टेंसिल होता है, उसे इंटीरियर ऑफ द डोमेन में ट्राई करते हैं, इंटीरियर ऑफ द डोमेन में एनालाइज करते हैं, उसे हम बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर एनालाइज नहीं करते. तो फोरियर एनालिसिस की, लोकल फोरियर एनालिसिस की कुछ कमजोरियां हैं और कुछ स्ट्रेंथ्स हैं. स्ट्रेंथ ये है कि लोकल फोरियर एनालिसिस करना जो है वो इजियर होता है देन दिस रिगरस एनालिसिस, और उसमें आप बहुत सारी खास बातें हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप आइडियल कंडीशंस ले सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस को टोटली इग्नोर कर सकते हैं. फाइनाइट ग्रिड और फाइनाइट ग्रिड के साथ जो rigorous चीज़ें हैं, you can do away with those and you can just say that what I have here now is an infinite grid and a stencil, and all the points, since the grid is an infinite grid, every point is an interior point. Infinite grid में कोई there are no boundaries. Okay, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है that you have to make Fourier space, in a manner of saying, with theta 1 and theta 2
in 2 dimensions. And this point, by the way, this is 0, this is negative pi by 2, this is pi by 2, this is pi, this is negative pi, and similarly this is negative pi by 2, this is 0, this guy here is pi by 2, this is pi, and ये हमारा पूरा फोरियर स्पेस कहलाती है ये चीज लोकल फोरियर एनालिसिस में। और फ्रीक्वेंसी सेट को यूजुअली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? ये है नेगेटिव पाई टू पाई, इस साइड से क्लोज, इस साइड से ओपन आमतौर पे, बट यू कैन ऑलवेज सी वेरी फसी ऑथर्स which insist कि नहीं हम तो माइनस पाई के साइड से जो है ओपन रखेंगे और पाई के साइड से क्लोज। कुछ ऐसे भी ऑथर्स हैं विच आई नो जो कहते हैं कि हमें तो जीरो वाली चीज चाहिए ही नहीं क्योंकि जीरो इज इन बिटवीन आ रहा है, 2 ग्रिड एनालिसिस में मुसीबत हो जाती है हमारे लिए, हमें से पाई से 2 पाई देंगे। देयर आर मेनी पीपल हु डू थिंग्स ऑफ ऑल सॉर्ट। ठीक है, इसमें अंडरलाइंग चीज क्या है? अंडरलाइंग चीज है पीरियोडिसिटी ऑफ द exponential function. So the exponential function e to the power I theta is basically a linear combination, a complex linear combination of sine and cosine. तो क्योंकि साइन और कोसाइन की पीरियोडिसिटी सेम है, इस वजह से आप इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो चीज है जिसे हम टी लो कहते हैं, ये टी लो है नेगेटिव पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक, यानी कि ये छोटा वाला स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली टी हाई क्या होगा? माइनस पाई से पाई तक का जो बड़ा स्क्वायर है उसमें से सेट डिफरेंस ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक का छोटा स्क्वायर। ये हाई फ्रीक्वेंसी रिजीम है। हाई फ्रीक्वेंसी रिजीम पहले कैसे? अब सिर्फ एक थीटा है आपके पास, और अब इस केस में ऑल्टरनेटिव मैं ब्लू में लिख रहा हूं। अब ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है? e टू द पावर i j1 थीटा 1 प्लस j2 थीटा 2, और ये जो j1 थीटा 1 है, this basically is J1 की वही वैल्यूज हैं सारी जो आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऊपर ग्रिड पे आप लेंगे, और J2 की वो वैल्यूज हैं जो आपको अलोंग थीटा 2 लेनी है। ओके, लेट्स सी हु हैज अब्सॉर्ब्ड दिस लास्ट फिनोमेनन। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये जो ब्लू में मैंने लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? e टू द पावर i विच इज द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल j डॉट theta. Just imagine that I write it like that. So e to the power I theta क्या होता है? cos theta plus I sin theta. It is the same thing. यही चीज है, लेकिन यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है मैंने, उसे मैंने क्या सोच के लिखा हुआ है कि ये जो कैपिटल J है, ये है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं J1 J2, और ये जो कैपिटल थीटा है इसके दो कंपोनेंट्स हैं थीटा 1 थीटा 2, और थीटा 1 थीटा 2 की जो रेंज है वो रेंज इन स्क्वायर्स के अंदर है। तो अगर मुझे सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रेजिम की बात करनी है तो मैं किस चीज की बात करना चाह रहा हूँ? मैं इस स्मॉलर स्क्वायर की बात करना चाह रहा हूँ। और अगर मुझे हाई फ्रीक्वेंसी रेजिम की बात करनी है तो मैं जो सराउंडिंग स्ट्रिप है छोटे स्क्वायर को एलिमिनेट करके मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ।
ओके सो एक इम्पॉर्टेंट चीज, कौन सी बाउंड्रीज जो है मैं इंक्लूड करूं हाई फ्रीक्वेंसी रेजिम में? मेरे पास इस वक्त 8 बाउंड्रीज है। कौन सी बाउंड्रीज इंक्लूड होनी चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी रेजिम के अंदर? कौन सी? क्या मैं इस लाइन को इंक्लूड करूं हाई फ्रीक्वेंसी में, इस बाउंड्री को? ओके, इस बाउंड्री को इंक्लूड करूं? इस बाउंड्री को इंक्लूड करूं? इस बाउंड्री को इंक्लूड करूं? यस। इस बाउंड्री को इंक्लूड करूं? इस बाउंड्री को इंक्लूड करूं? Absolutely fabulous, Imran. So these are the boundaries that could be included, and the entire surrounding strip would be included in the high frequency range. So whenever you have to optimize a function, for example, optimize a smoother to get the smoothing factor or to get the over relaxation parameters, you have to use values of theta which are in this regime and which include only these 4 boundaries. Right, so we start here. As before, we are interested in how a particular relaxation scheme acts on the errors in an approximation. Assume that relaxation is a linear process and denote the associated matrix by R. Relaxation की जो भी matrix है, चाहे Jacobi iterative matrix हो या Gauss-Seidel iterative matrix हो या SOR हो, just now call it collectively R for now. ये R restriction नहीं है. This book में restriction capital I से represented है, याद रखिएगा. It's in my code that I write R for restriction and P for prolongation. Okay. Let E within brackets M denote algebraic error at the mth step of relaxation. Relaxation के हर step पे error जो है वो evolve कर रहा है. ठीक है, कैसे evolve कर रहा है? Grow कर रहा है, decay कर रहा है, decay कर रहा है. If the relaxation scheme has to be effective, error has to decay, cannot grow. So mth error को cap हमने E super M से represent किया है. Error itself evolves under the action of R. We know that the M plus first error is R times the mth error. The approach of local mode analysis is to assume that the error consists of Fourier modes and to determine how relaxation acts on those modes. ये वाला जो part है, ये regress Fourier analysis जो हम पीछे चक के आए हैं, just tasted it briefly, और local Fourier analysis के बीच में common है. उसमें भी हमने यही देखा था. अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर दें, ट्राई टू रिकलेक्ट, उसमें हमने यही देखा था जब k की वैल्यू n प्लस n/2 प्लस n/2 से n-1 के बीच में होती है, तो उस पे किस तरह रिलैक्सेशन एक्ट करती है उन मोड्स पे, और जब k की वैल्यू 1 से n/2 -1 तक होती है तो उस पे कैसे एक्ट करती है. अब यही चीज हमें देखनी है. ये चीज हमने पहले देखी थी. अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म थी थीटा, जो पहले ये चीज थी k pi by n, now runs which used to run roughly का मतलब है in discrete point from 0 to pi with the new assumption of an infinite domain, no boundaries or boundary conditions to satisfy. The Fourier modes need not be restricted to discrete wave numbers. Instead, we consider modes of the form. This is usually taken as phi j is e to the power I j theta. अगर आपके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है तो e to the power I j theta, और अगर दो डायमेंशंस हैं तो आपको इसके बीच में डॉट लेना पड़ेगा j और थीटा के बीच में, which is this quantity. What is the computer heating up like a saucepan?
missed the fun part. Every time I'm ranting, पूरी लाइन को तो आना चाहिए. Yeah. पूरी लाइन चाहिए. आती है वैसे, by the way, that I know. By the way, what is the one thing, one statement that ensures that you ultimately learn? That you will ultimately learn. There's one thing that you must be aware of from your inner self. If you don't know that, then you'll never learn. It's the true inner cognizance of I do not know. The more aware you are of what you do not know, the more learned you are. I mean, what we do know is very, 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 very small. What we do not know is like an ocean. All right. So never get embarrassed by saying I don't know. It's the most honest intellectual statement you can ever make to anyone. I mean, I don't want you to irritate people by saying that constantly or saying it in an exam, for example. But उसको पहले ही उठा के इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि उसके लिए उतरना भी मुमकिन नहीं होता. All right, so an important point should be mentioned here. Local mode analysis or local Fourier analysis is not completely rigorous unless the Fourier modes are eigenvectors of the relaxation matrix, which is not generally the case. However, the analysis is useful for the high frequency modes of the error, which do tend to resemble the eigenvectors of the relaxation matrix very closely. This is a fact that I had always come across in text, often wondered what it meant, and just have been fortunate in the last 1 month to actually see that in action over a problem that I'm solving with Zulfikar. So he has a nice problem, the Helmholtz square problem. I'll show you that problem in case one of you is interested in it. So the problem is something like this. So ये ऑपरेटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. So this is a fourth order differential operator. This is a fourth order differential equation. ये आपका negative Laplacian है. Minus k square is the Helmholtz term. इसको Helmholtz square operator भी कहते हैं. और इस ऑपरेटर में हमें पहली दफा ये चीज नजर आ रही है, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोकल फोरियर मोड्स हैं वो एक्चुअली रिलैक्सेशन मैट्रिक्स, वो एग्जैक्टली जो आपकी मैट्रिक्स है उसके आइगन वेक्टर्स नहीं है. ठीक है. लोकल mode analysis is not completely rigorous unless the Fourier modes are eigenvectors of the relaxation matrix. हो क्या रहा है, जिन Fourier modes के ऊपर हमने स्मूथिंग फैक्टर्स कैलकुलेट किए, जब हमने मल्टीग्रिड एल्गोरिथम उन पे चलाना शुरू किया तो हमें नजर आया कि मल्टीग्रिड एल्गोरिथम अच्छा काम नहीं कर रहा. जो कन्वर्जेंस फैक्टर्स हमें 0.2 के नजदीक नजर आने चाहिए वो हमें 0.8 और 0.85 और 0.93 इस तरह नजर आ रहे थे. And there was apparently no explanation of it. कि क्यों हो रहा है. So naturally we had to run the experiment over each Fourier mode separately. And we thought that every mode would decay as per its eigenvalue, as is natural to expect. But we found that the local Fourier mode was not even an eigenvector of the relaxation matrix in that case, which was a big shock to me personally. But then I reverted back to the literature and I thought that I am observing one of this thing, and when I consulted one of the collaborators that I have, they affirmed that as well. Helmholtz square operator used in liquid crystals.
So however, the analysis is useful for high frequency modes of the error which do tend to resemble the eigenvectors of the regression matrix very closely. हमारे केस में ये चीज भी true नहीं है by the way, यानी जो मैं भी आपसे केस डिस्कस कर रहा था. For this reason, local Fourier analysis is used for a smoothing analysis of the high frequency modes. Now with these rules, we are ready to apply the method. We begin with the one-dimensional problems and assume that the error at the mth step of relaxation at the jth grid point consists of a single mode of the form. अब वो single mode किस form का है? वो single mode इस form का है. ये mth error है. इसमें एक छोटी सी नोटेशनल हिच है. इसमें जो आपको राइट साइड पे स्मॉल ई नजर आ रहा है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो आपको लेफ्ट साइड पे स्मॉल ई नजर आ रहा है वो अलजेब्राइक एरर है. तो डू नॉट कंफ्यूज द टू. अक्सर लोगों ने पूछा है कि ये जे से पहले क्या लिखा हुआ है. ये जो चीज जे से पहले लिखी हुई है इसको आयटा कहते हैं, और आयटा में आपके लिए तिलान अर्ज ऊपर डॉट नहीं होता. ठीक है, याद रखिएगा. आयटा स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी यूनिट. Iota is written like this. This is iota. It doesn't have a dot here. Okay, which is why this is not a misprint, by the way, as you can see. So this is E iota j theta, where in this book, इस बुक में वो कन्वेंशन फॉलो हुआ है जो हमने किया है थीटा के लिए. नहीं, ये दूसरी साइड से ओपन है, दूसरी साइड से क्लोज है. So it depends on what is your personal preference, but you must be consistent. Okay, ये जो AM है ये क्या चीज है? What is this AM right here? Amplitude. So how would the amplitude change? The amplitude has to be the ओके. तो अब अगर हम थीटा को ये वैल्यूज दें, ये सारी वैल्यूज, तो AM जो है हमारे पास, आपके ख्याल में क्या चीज होनी चाहिए? What should AM be? So if we have E, which is the mth error, and we are saying this is amplitude times j theta, j be just one dimension, theta be one dimension. What should this AM be? Should this be the eigenvalue? Should this be the eigenvalue? Theta ranges from negative pi to pi. You can open the flow rate from whichever end you like. Okay, एरर क्या है? मिसबा एरर क्या है? लेफ्ट साइड पे जो वेक्टर नजर आ रहा है, क्या ये वेक्टर है, स्केलर है? लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है ब्लैक में, दिस इज वेक्टर और स्केलर. mth iteration. So what quantity is it? It's a vector, a column vector. You agree with that? Right. Okay. Is that hint enough to improvise your answer? It's a column vector. It's arbitrary. It has to be composed of many frequencies, not just one. So AM has to be many eigenvalues, not just one. Let's suppose that AM is a matrix which has on its diagonal eigenvalues, and you have a linear combination of eigenvectors which is being scaled by those eigenvalues. Okay, so AM is the amplitude, and in this case that you consider AM as a scalar, you have to consider just one frequency. Then it would be the same thing as the eigenvalue. So the function G, अब एम्पलीट्यूड्स कैसे ग्रो करते हैं हमें ये देखना है. हम एम्पलीट्यूड्स में इंटरेस्टेड होते हैं, एम्पलीट्यूड्स या आइगन वैल्यूज में इंटरेस्टेड होते हैं. ग्रो करना इज नॉट द राइट वर्ड. इवॉल्व कैसे करते हैं
दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक कि जो m प्लस फर्स्ट इटरेशन है उसमें mth मोड ने किस तरह से ग्रो किया होगा या किस तरह से इवॉल्व हुआ होगा. So this is the function g theta. The function g that describes how the error amplitudes evolve is called the amplification factor. और हम principally smoothing analysis में amplification factor में interested होते हैं. Amplification factor जब आप calculate करते हैं over the high frequency modes only, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? Smoothing factor. Amplification factor जब हम calculate करते हैं overall, तो फिर इसी चीज को हम क्या कहते हैं? Convergence factor of the relaxation scheme. So naturally, for the convergence of the method, we must have this bounded by 1 for all theta. As we've seen, relaxation is used in multigrid to eliminate the oscillatory modes of the error. Therefore, the quantity of interest is really the smoothing factor, which is found by restricting the amplification factor calculation to the oscillatory modes, which are these modes. So you just need to bound it, close it from one side. Specifically, we define the smoothing factor as this quantity. इसको universally letter mu से represent किया जाता है. Mu क्या है? Smoothing factor है. Mu को भूलिएगा नहीं. Mu is important. Okay, this is the factor by which we can expect the oscillatory modes to be damped at worst with each relaxation sweep. With these definitions, it's best to proceed by example. We'll do the example in the next class. This class, I want to explain to you what we observed with the Helmholtz square operator. Okay, so the first thing was to proceed by instant, and let me shamefully accept by brute force. We had a working multi-grid code. We changed the operator and made some changes to the interpolation routine. For example, fourth order operator था तो हमें bicubic interpolation करनी. Multi-grid code क्यों कौन सा fit किया वही Vcycle run किया. And we were expecting कि 0.5 के करीब convergence factor होगा. 10-15 iteration में क्या problem solve हो जाएगा. लेकिन जब problem को 256 पे हमने discretize किया, हमने देखा कि 300-400 iteration. And the convergence factor was shooting up to 0.98, 0.95 इस तरह के convergence factor. This was difficult to accept for the reason कि हमने एक ऐसे ऑपरेटर के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ था जिस ऑपरेटर की नेगेटिव आइगन वैल्यूज थी, thereby forcing the entire spectrum into the first quadrant. हमने पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स कर दिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स करने का मतलब है कि सारी आइगन वैल्यूज वो पॉजिटिव है. पॉजिटिव है इन द कॉम्प्लेक्स सेंस. लेट मी बी क्लियर. कॉम्प्लेक्स सेंस का क्या मतलब है कि अब रियल नंबर लाइन का नहीं है आइगन वैल्यूज, बल्कि आर्गेंट प्लेन के अंदर. तो उस आर्गेंट प्लेन में सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स हो गई थी. उसके बावजूद प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह कन्वर्ज नहीं कर. So what can be the next step? The next step was to write Vcycle smoother कैसे काम करता है. पता है कैसे काम करता है. हम उसको discretize तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स. एक मल्टीप्लिकेटिव पार्ट होता है, एक इन्वर्जन पार्ट होता है. इन्वर्जन पार्ट नीचे आता है फ्रैक्शन में, जब उसमें आप एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज अ ट्रू थिंग आई एम डिस्क्राइबिंग, बट आई विल डिस्क्राइब इन डिटेल. टॉप पे उसका मल्टीप्लिकेटिव पार्ट. और फिर हम देखते हैं कि अब इसको जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे ओवर द हाई फ्रीक्वेंसी रेजिम, तो नंबर क्या आ रहा है. अगर नंबर 0.5 या उससे छोटा आ रहा है, इट्स अ गुड स्मूदर. 0.5 से 1 की तरफ आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड स्मूदर. 1 को हक कर रहा है, बिल्कुल 1 के करीब है, इट्स अ वेरी बैड स्मूदर, क्योंकि मेथड अल्टीमेटली स्टॉल करने लगे. तो अब हमें नजर आया कि Vcycle के केस में जो स्मूथिंग फैक्टर आ रहा है हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर ऑपरेटर के लिए 0.8 है. So that was the first thing which got us a bit shocked and hesitate. Vcycle नहीं काम कर रहा था, क्या करें. फिर एक तरीका ये था कि इसमें मल्टीपल जैकोबी स्टेप्स. We are equipped algebraically to use different relaxation parameters with each Jacobi sweep that we use एक के बाद एक in a
जब हमने उसको ऑप्टिमाइज किया लेट्स से फॉर 5 सक्सेसिव जैकोबी स्वीप, तो हमें नजर आना शुरू हुआ कि अब इसका स्मूथिंग फैक्टर है 0.3। साइकिल को रिप्लेस कर देते हैं these optimal realization parameters, 5 अदर, each one calculated separately, और एक दफा हमने उसे 5 स्टेज जैकोबी की Krylov subspace इसलिए मुकद्दर यूज नहीं किया that it's not a smoother, being not a it's generally known as a rougher। ठीक है, हमें स्मूथिंग का काम होता है। स्मूथिंग का काम क्यों होता है? स्मूथिंग का काम इसलिए होता है कि जब स्मूथ हो गई होती है ना क्वांटिटी, तो हम उसमें से ग्रिड पॉइंट्स रिड्यूस कर सकते हैं। अगर एक क्वांटिटी स्मूथ हो गई है तो वो कम रेजोल्यूशन में भी रिप्रेजेंट हो जाएगी सफिशिएंट। अगर हमने एक चीज को रफ कर दिया है और रफन अप कर दिया है तो हम उसकी ग्रिड में से पॉइंट निकालेंगे तो एसेंशियली so we essentially need an algebraic smoother in the case of smoother, but the idea that you have is a good idea. We have also used Krylov rougher at for some other problems where we were not sure if smoother. For this one we had no alternative. We don't have any alternative. We just wish to find out what's going on. That's the main attraction at this point. हमने यहाँ पे तो दिल खड़ा कर लिया है कि ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा अभी तक, लेकिन स्मूदर जो कि हमें थ्योरेटिकल एनालिसिस से, लोकल फोरियर एनालिसिस से जो स्मूथिंग फैक्टर नजर आ रहा है, वो स्मूथिंग फैक्टर क्यों नहीं नजर आ रहा जब हम उससे स्मूथिंग करा रहे हैं? उसको हमने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया एक एक सेपरेट आइगन वेक्टर के ऊपर, तो हमें पता चला कि आइगन वेक्टर। अब इसको आप इस तरह से देखिए कि आपके पास एक तो है स्पेस Rn, ठीक है, इसका एक बेसिस कहां से आ रहा है? आपके पास एक फोरियर मोड्स का बेसिस है, और एक है आपकी रिलैक्सेशन मैट्रिक्स, उसके आइगन वेक्टर्स हैं, वो भी कंप्लीट सेट है। तो हम शुरू में ये समझ रहे थे कि जो लोकल फोरियर मोड्स हैं वो आइगन वेक्टर्स हैं रिलैक्सेशन मैट्रिक्स के, मगर रिलैक्सेशन मैट्रिक्स को भी अगर आप उसके तमाम आइगन वेक्टर्स को दो सेट्स में तोड़ दें, एक को हाई फ्रीक्वेंसी का, एक को लो फ्रीक्वेंसी, विदाउट अ डेफिनेशन, जस्ट अ लूज नोमेनक्लेचर, आपने दो सेट्स में तोड़ा, एक को हाई फ्रीक्वेंसी, एक को लो फ्रीक्वेंसी, नोइंग इन योर ओन सेंस कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वो है जो रिलैक्सेशन से जल्दी डैम्प हो जाते हैं, लो उनका नाम रख रहे हैं। तो हमें पता चला कि जो लोकल फोरियर मोड्स हैं हाई फ्रीक्वेंसी, they were already a linear combination of the relaxation matrices high and low frequency items. Low frequency ones की वजह से वो persist है. We don't yet have a solution. We're looking for a solution as we speak. So this is the kind of work that we usually do. I will continue with this in the next class, where we will see how amplification modes basically give us back the eigen value calculation for Jacobi and Gauss-Seidel, and then we'll move on to the spectral picture very soon. After we are done with this entire one-dimensional analysis that this book offers us, would we move on to Trottenberg's chapter number 2, checking out the variations in what we can do in scientific computing, and then take a few steps back, skip chapter 3, move on to chapter 4. Chapter 3 is rigorous Fourier analysis, where we won't spend time there. Move on to chapter 4, so that if you have a research problem, you know how to do its local Fourier. That's where I end today's class. Thank you.